Yep. Hello, hi everyone. Uh, sh- hello everyone. Hello. Am I visible and audible as well? Do let me know. Hello. आवाज आ रही है? Uh, okay. Hello भाई, कैसे हो सब? How was your day? Yeah, it was good. बाकी आप बताओ कैसे चला? Yes. Hello everyone. Hello. Good evening. अरे भाई क्या हो गया? बफरी गुस्सा क्यों हो रहे हो? Hello everyone. Hello. Good evening. Good evening Naveen. Good evening. ठीक है. पिछले लेक्चर्स में से कुछ डाउट है किसी को? डाउट है तो विल बी गिविंग 5 to 10 minutes फॉर द डाउट सेशन, राइट? तो अगर है तो डाउट बता दो कुछ. विल बी गिविंग 5 to 10 minutes फॉर डाउट्स, राइट? एंड उसके बाद वी विल कंटिन्यू. ठीक है. यस, array विल बी कवरिंग टुडे. array ऑब्जेक्ट्स. अच्छा, array ऑब्जेक्ट्स विल बी कवरिंग टुडे. उसके बाद विल बी कवरिंग DOM मैनिपुलेशन. एंड उसके बाद हम करेंगे एक प्रोजेक्ट छोटा सा. ठीक है. प्रोजेक्ट में विल बी डूइंग द फॉर्म वैलिडेशन. मैंने कल बताया था वही करेंगे. गुड इवनिंग हर्ष. गुड इवनिंग. बाकी लोगों को बोलो ज्वाइन करने के लिए. आई थिंक अपने ग्रुप्स में डाल दो मैसेज, जहाँ भी आपका कुछ ग्रुप है तो देन विल स्टार्ट. बाय द वे, किसी को डाउट है पिछले 2 लेक्चर्स में से तो आप पूछ सकते हो. पिछले लेक्चर्स में हमने जो टॉपिक्स कवर किए थे, अगर कुछ भी रिलेटेड डाउट है अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग एल्स, यू कैन आस्क मी. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. यस. इन द मीनवाइल लेट मी राइट द टॉपिक्स जो हम आज कवर करने वाले हैं, राइट? सो मोर और लेस विल बी covering, we'll be starting with arrays, and after that we'll be covering objects. ठीक है. ऑब्जेक्ट के बाद we'll move to DOM manipulation. This whole will take a lot amount of time. ठीक है. आफ्टर DOM जो हमारा लास्ट पार्ट बचेगा दैट विल बी अ मिनी प्रोजेक्ट, जिसमें से आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग अ फॉर्म वैलिडेशन वन. फॉर्म वैलिडेशन. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. फिर बाकी लोग कहाँ हैं? आज काफी कम स्ट्रेंथ लग रही है. हम्म. यस. शैल वी स्टार्ट और शैल वी वेट फॉर अनदर 2 minutes to others for 2 others to join? क्या करना है? स्टार्ट करें? अगर डाउट्स है तो डाउट्स पूछ लो. कुछ भी डाउट्स फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर, अगर कुछ भी रिलेटेड डाउट्स हैं तो डू लेट मी नो. अभी कोई डाउट नहीं है किसी को 2 दिन से? बाय द वे, कल की प्रैक्टिस करी थी? आई होप आपने प्रैक्टिस करी होगी जो कल टॉपिक्स कवर हुए थे हमारे. यस्टरडे हमने क्या कवर किया था, एक बार देख लेते हैं. फंक्शंस वगैरह कवर किए थे सबको, स्विच वगैरह. डू यू गाइस गो होम एंड प्रैक्टिस? स्विच अलग से प्रैक्टिस किया था? Okay, yeah, we'll be waiting for another 1 to 2 minutes. Let others join and then we'll start. In the meanwhile, I was just saying that did you guys practice all these things which we covered yesterday? Yes. So today we'll be doing callback function as well. सही याद दिलाया उसको, callback भी करना है. Okay. Callback इसके बाद करते हैं. चलो. Callbacks. ठीक है. अनुराग ने प्रैक्टिस किया सिर्फ. What about others? अनुराग मौर्य has only practiced it seems. बाकी लोगों का क्या क्या है? Hi करण. Hi.
In the meanwhile, let me mix the today's JavaScript file. So I'm calling it script3.js. script3.js, ठीक है. टू को बंद करते हैं. Let's close and let's close this. Okay. उदय प्रैक्टिस राजस्थानी स्टेटस. यार नाम क्या रख रखा है. श्रद्धा पटेल प्रैक्टिस. ठीक है. ओके. प्रैक्टिस करी थी. कुछ डाउट्स हैं पिछले लेक्चर में से. फंक्शंस के बारे में कुछ डाउट्स हैं तो लेट मी नो. I'll clear them. उसके बाद अगर एक बार स्टार्ट कर देंगे देन फिर मत बोलना बीच में. अगर डाउट है तो अभी पूछ लो. ठीक है. आई थिंक किसी को डाउट. Shatisha says where a equals to 10 if a not equal. अच्छा, if a not equal to 10, what's the answer? So in this case it will return a boolean value. देखो, let's suppose I told you that you have var a equals to 10, right? And you say if a is not triple equal to, yeah, triple equal to 10. So you have to at least print something, right? या फिर कुछ कर सकते हो इसका कंसोल. अगर आप लॉग ही करोगे इसको कंसोल डॉट लॉग 1 या फिर 1 else log you log 2, right? तो इस केस में if I go here node script 3, I'll get 2. ठीक है. yes yes. और अगर if you एक चीज और थी इसके अंदर. क्या कह रहा था हाउ. अरे हाउ यार. 10 के इक्वल थोड़ी है. अगर ऑब्वियसली दिस इज नॉट इक्वल टू 10, राइट? तो यहाँ पे क्यों एंटर करेगा ये सतीशा? got it, like it is not equal to 10, right? So it will not enter this line number 3, right? अगर अगर इक्वल होगा तो करेगा एंटर. this is a triple equal topic, right? हमने उस दिन डिस्कस किया था ना. ट्रिपल इक्वल टू will also check the type of the data type, right? टाइप भी चेक करता है बट डबल इक्वल टू नॉट चेक द टाइप. इट विल जस्ट चेक द, वो बस एक नंबर चेक करेगा इफ इट देयर और नॉट. फिनिक्स सेज console.log 5. तो इसमें आपका कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा. console.log देखो, console.log का कह रहे हो आप 5 प्लस इट इज अ स्ट्रिंग. दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग टेम्पलेट. ठीक है. प्लस 5. now if I come here I do this, you'll get 555 because इसमें देखो होता क्या है. I'll tell you. देखो पहले लेट्स सपोज पहला केस है हमारा. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट पार्ट. ठीक है. हमारे पास 5 है. ठीक है. any number which is added to a string, it will just concatenate means it will just put the number to its side. तो let's suppose हमारा पहला केस है केस 1. ठीक है. केस 1 में if I come here तो हमारा क्या होगा. it will be 5 plus string 5. this is a string, right? तो string 5 plus 5 will not be equal to 10 because it is a string format. अगर ये नंबर होता देन हमारे 10 हो जाता. बट इस केस में it will be 5 plus 5 55. ठीक है. तो अभी हमारा कैसा बना है. अभी हमारा ये बना है. we have this now like this 55 in a string format because any number added to a string will result in a string. उसके बाद आप क्या कर रहे हो. दोबारा से एक 5 ऐड कर रहे हो. ठीक है. तो इसमें भी सेम है. any string added to a number will add in a string. तो इस केस में आपका क्या बनेगा 555. इसलिए आपका आंसर आ गया है 555555. ठीक है. got it Phoenix? double equal to just check the content quantity. Yes, double equal to will not check the data type. Yes, it will only check the number, whatever the number is, or in either format. Whereas triple equal to will check the data type. So let's suppose if it is a string, या फिर अगर नंबर भी मिला है हमको तो नंबर भी चेक करेगा. ठीक है. चलो ठीक है. आई थिंक नाउ द स्ट्रेंथ इज इनफ. लेट्स स्टार्ट द सेशन. ओके. चलो ये भी छोड़ो. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद
लेट्स स्टार्ट विद एरेज। ठीक है, आई होप सबको पता होगा यार एरेज होते क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो लेट मी जस्ट do it like this. तो I have here arrays। ठीक है, arrays। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग विद arrays, किसको आइडिया है व्हाट आर arrays? इफ यू आर कमिंग फ्रॉम C++ और जावा बैकग्राउंड तो arrays तो करे ही होंगे, राइट? यू गॉट एनी आइडिया व्हाट डू यू मीन बाय arrays? व्हाट आर arrays? एनीवन? Yes, got any idea what do you mean by arrays? Array is a data structure to store similar type of value. Yes, if, yeah, okay. Collection of data types. Okay. Anything else? Collection of data of same type. I think you are all coming from this. You're all coming from Java background. That's why you're saying similar data type, homogeneous collection. Now, if you come to array, your vision will change about arrays, right? Set of values, similar type of data, but in JS it can store different data. Yes, Udit, but now exactly. It is a homogeneous type of data structure. Yes, Saurav, if you're coming from Java, C++ background, I can understand. Anything else? Any other answers? I think most of you have guessed it correctly. So what are arrays? Arrays are nothing but arrays. They are a collection of data type. Collection of data, I would say. ठीक है, देखो, in only in case of JavaScript, right? Only I'm talking about in JavaScript. Let's suppose not in JS. arrays का थोड़ा different scene होता है, ठीक है? तो आपने if you are coming from C++ background और Java background, तो वहाँ पे क्या होगा? If you are using array, you can only store a similar data type, right? If you are storing numbers, आप सिर्फ नंबर स्टोर कर सकते हो, बट अगर आप स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हो तो आप सिर्फ स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हो। बट इन केस ऑफ JS it is not like that. You can have a mixed data type in this, right? So the data type can be anything. What do you mean by what do I mean by anything? I meant like anything means it can be heterogeneous, right? Heterogeneous. पहले क्या था? in case of C or C++ it was homogeneous, right? But in this case it is heterogeneous. Ideally, but ideally what should be ideally? You should only, right? Not only, you should have similar data type. ठीक है, ideally होना क्या चाहिए? आप you should be considering only a single data type, but JS allows you to also store multiple data types. ठीक है, तो if I come here quickly and उससे पहले how do you declare array, right? It's array can store multiple values, subsequently store data in JS array can, yes, exactly. ठीक है, तो in only in case of JS, only in case of JavaScript में कैसा होता है? You can have multiple data types of in an array. You can have a string, you can have a number, you can even have objects, right? Objects में I'll be covering what do you mean by objects, and you can even have arrays inside your arrays. You can even have an array on one index. जैसे suppose आपके first index में you have a number, second index में you have a string, थर्ड इंडेक्स में you can also have an array, right? array के अंदर आप array डाल सकते हो, ठीक है? how do you declare array, right? कैसे declare कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं. how to declare, DECLARE. how to declare कुछ नहीं है, बहुत आसान है, जैसे पहले करते थे वैसे ही इसमें भी. you take a keyword, let's suppose var, variable हमने बनाया, you give the name, let's suppose ARR equals to, and you put two square brackets like this, as simple as that. Exactly, ठीक है. So let's just quickly jump to an example. I'll just move it here, not here. ठीक है, राइट. तो डिक्लेयर कैसे करते हैं? कुछ नहीं है, जैसे मैंने बताया था, you have an var, you create a var, you give a name to your array equals to, and you just put a square brackets, right? After that, let's suppose
Let's suppose I give it some value 1 2 3. This is a usual case, right? जैसे आप करते हैं. And if I go here, if I console.log, ARR, and if I print it, you'll get the output, right? In this format. But the interesting part here is, जो कि आप लोगों ने अब तक नहीं किया था, that is you can even store a string in your array like this, and it will work perfectly fine. ये हमको error नहीं देगा. अगर मैं जाऊं, अगर अब now if I do Node.js, and now you can see my array is heterogeneous. It has a heterogeneous data type. That is, it has got numbers and it has got your string data type as well. I even can put another array. So let's suppose I declare another array where ARR1 equals to, let's suppose I give it value some a value of 20 and 30 and 30 like this. And even I can place this value here. देख रहे हो कैसे? Now if I print it, देखो, I have a number, I have a string, and third is I have an array. Array के अंदर I have an array. That is what I meant by heterogeneous mixture, right? What do I mean by heterogeneous mixture? That it can have multiple data types. It can have multiple data types. It can have multiple data types. That's what I meant by heterogeneous. ठीक है? Got it? Got it? What do you mean by arrays? What are arrays? Got it? But ठीक है, अब ये तो हो गया arrays वाला part. ठीक है, अब एक चीज और. In case of arrays, right? अगर आपको there's I'll also tell you some methods. ठीक है, कुछ common methods मैं बता देता हूँ आपको. So let's suppose you are here and let's open my Excel drawer. ठीक है, तो here if you see, if I want to add any other number या फिर कुछ और add करना है, but I don't want to add it like this way, right? The first method is you can add it like this inside an array. But let's suppose you have already created an array and उसको आपको उसके बाद add करना है. So you have a method called push. ठीक है, so let's suppose I do it like this, ARR dot push. And here you specify what do you want to push. You can push anything you want. Let's suppose I'm pushing 7. Now if I go and if I now print, तो अब देखो, ये देखो मेरा 7 यहाँ पे लास्ट में पुश हो गया. As simple as that. ठीक है. Similarly, there is one for pop. Yes, Naveen, I'm coming to objects as well. इसके बाद we'll discuss, right? ठीक है. Similarly, you can also have pop. ARR dot pop. This will pop, right? So if I come here, if I do like sorry, yeah, I have to call it as well. Call the method. Now if I do pop, as you can see, यहाँ पे जो 7 था मेरा, now it has been deleted, right? Remember, pop will delete the element from the last of your array. जो हमारा last index होगा ना, it will delete that. But push, अच्छा हाँ, push will also insert an element at the last of your array, right? So if I come here, if I अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, तो just quickly come here, pop. ठीक है, पहला था हमारा push से क्या होगा? This will push elements in your arrays. ठीक है, same goes for pop. Pop क्या करेगा? This will, instead of push, it will remove elements from your array. यहाँ पे भी from your array. नहीं, आप उससे you cannot have it on the first position. उसके लिए you have got certain other methods that will be covering at other classes, not now. ठीक है, but for now you can only insert and add at the end of the array. ठीक है, चलो एक चीज बताओ. Without even consoling, I want to tell you the answer for this one. So let's suppose मैंने एक और push बनाया, push, ठीक है, push and push and push and push. यहाँ पे I am pushing, let's suppose let's upgrade, और यहाँ पे I'm removing this, and यहाँ पे ARR dot push, यहाँ पे I'm pushing YouTube. ठीक है,
YouTube। एंड उसके बाद आई एम कॉलिंग पॉप हेयर, यहाँ पे मैं पॉप कॉल कर रहा हूँ, और एक में आई एम कॉलिंग पॉप हेयर, ठीक है। एंड उसके बाद आई एम प्रिंटिंग द एरे, राइट। नाउ आई वांट यू टू टेल मी द आंसर फॉर दिस वन, राइट। सो व्हाट आई हैव डन इज, एक लेट मी जस्ट zoom in my screen. So this is my array, right? 1 2 3 4 Ritik ARR1. ARR1 is this, and I'm pushing 7. I'm pushing let's subtract, pushing 7, popping, pushing YouTube and popping. Now I want you to tell me the answer for this one. Yes, Naveen. Pop will also delete from the last. So push and pop, they'll both will, दोनों क्या करेंगे, दोनों लास्ट में से हमेशा डिलीट करेंगे, ठीक है। उत्पल says YouTube and 7 will be removed. Okay. What about others? What about others? लेट्स अपग्रेड तक आएगा, ठीक है। YouTube फर्स्ट रिमूव होगा, ओके, ठीक है, वेरी गुड अनुराग। व्हाट अबाउट अदर्स? शिफ्ट एंड शिफ्ट फॉर फर्स्ट, ओके, शिफ्ट एंड शिफ्ट, देन 7 विल बी रिमूव्ड, ठीक है। तो क्या, here you have the answer, 1 2 3 4, sorry 1 to 4 Ritik, 20 30 they have got 7, you have got let's upgrade, you have got 7, you are popping 7, you're pushing YouTube, and then you're popping YouTube as well. Yes Utpal, exactly. Yeah, so YouTube will pop and let's upgrade will be added here, ठीक है। बस यही था भाई, it was this simple. After that we'll be covering objects, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। ऑब्जेक्ट्स आप लोगों ने करा नहीं होगा, आई थिंक चेस में it is only there. Let's see, objects. Right, anyone, what do you mean by objects? किसने कर रखा है objects यहाँ पे? What do you mean by objects? उसके बाद we'll come to a conclusion that in JavaScript arrays are not arrays. Arrays are कोई specific index कैसे check करेंगे? So for that you have to loop के बाद you have to check the index, not you cannot do directly, but you also got certain methods, right? तो एक बार methods देख लेना, I think you have what do you want to check exactly? So let's suppose you want to check the first index, right? So you have got the arrow notation for that. So let's suppose I want to just console.log ARR of, let's suppose this one, yeah, 0 1 2 3 ARR of, let's suppose ARR of 3, right? And now if I print this, and now if I console this, now I can see I've got Ritik like this. You use an arrow, the square bracket notation here. Got it, Karan, clear? Okay, yes, ठीक है। So yeah, I was an object, right? Right. Interesting fact, in JavaScript arrays are not exactly arrays. Arrays is an object, ठीक है। तो पहले we'll be covering what do you mean by objects, then we'll be coming to a conclusion that arrays are not arrays but they're object in this case. Data type, key value pair, example like a JSON file, exactly. Anyone else apart from Utpal? What do you mean by objects? Any other definition you would like to have? Right? Any other answer? Like structure in C? Structure in C. You mean a class? गुड इवनिंग रवि, लेट ज्वाइन किया गया। चलो ठीक है। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, तो इससे प्लीज लेट्स जस्ट फोकस बिकॉज़ दिस इज समथिंग न्यू। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम उत्पल यू डोंट हैव एनी guys don't have any idea. So let's see what are objects, ठीक है। So I would say what are objects, right? Objects are nothing. Objects are a set of key value pair, ठीक है। They are a set of key value pair, right? In this keys are strings and values can be anything. Values can be anything, right? But more or less, it is nothing but it is just a collection of
data similar to an array, right? Similar to an array. Similar, it is very similar. It is exactly similar to an array, right? But there are some differences which we'll be talking about in case of that. Otherwise, it is just C. Point being, it is a set of key value pair, right? And it is we use it at some other purposes, right? Agar hame, if you want to use something, let's suppose we want to apply some method, and in that case we can use arrays. But objects में क्या होता है? Objects, it's, let's suppose you want to store some information, right? You want to, so please explain in Hindi English both. हाँ ठीक है. तो मैं क्या कह रहा था, ऑब्जेक्ट्स के बारे में I was talking. ऑब्जेक्ट्स होते क्या है? ऑब्जेक्ट्स आर अ सेट ऑफ की वैल्यू पेयर्स, राइट? जस्ट लाइक योर एरेज, बट इनका इनका डिफरेंस होता है. बट द डिफरेंस इज लाइक द वे दे आर डिक्लेयर्ड, राइट? डिफरेंस ये होता है. प्लस एक डिफरेंस और है इनमें. आई विल बी टॉकिंग, लेट्स आई विल गिव एन एग्जांपल ऑन दैट जब जब बात करेंगे डिफरेंस. बट फॉर नाउ it is a set of key value pair. Keys can be strings, right? की हमेशा strings होती है, remember this. प्लस जो हमारी वैल्यूज होती हैं, दे कैन बी एनीथिंग, दे कैन बी एनीथिंग. करेक्ट? ठीक है. उसके बाद हाउ टू क्रिएट, राइट? अब क्रिएट कैसे करते हैं इसको? तो हाउ टू क्रिएट, ठीक है. देखो कुछ नहीं, सबसे सिंपल चीज, जैसे हमने एरे डिक्लेयर किया था ऊपर, राइट? एरे, सेम चीज. हम एक काम करेंगे, वी विल गिव इट अ नेम, अ वेरिएबल कर लो. वेरिएबल, the name of your variable, let's say obj, will put equal to, and in case of array we used square brackets, right? But here we will be using curly brackets like this, right? And here all your key value pairs will come up. Sorry, explain English, I don't know Hindi. Okay, I was just saying that how do you create an object, right? You create an object by this notation. You first declare a variable. After that, you create you give your name an object. Sorry, give your object a name, and then you specify all the key value pairs. Okay, forget about this. Let's directly come to an example. So let me just minimize this. Let me just comment this part out. Okay, how to declare? You give it a keyword called var, the name of your object, put an equal to, and here you specify the key and value pairs. Let's suppose I have a key as value, right? Key 1 as value, and you give a comma. You give a key 2 as value 2, give a comma, key, and you can have any number of keys as you can have uh, any number of keys and value pairs as you want. Yes, value 3, right? And if I come here and if I console.log obj, okay? Now let's see what we get as an output. Right? Dekho. Let me just first clear it out and node script 3. ये देखो, right? As you can see, key, you have a key, you have a value, you got a key, you got a value, and you got a key, you got a value, right? This is what is called as an object, right? This is an object right here. बहुत ही simple है, ठीक है? Got it? What is the difference between var and let? So the difference I'll be talking about in later part as well. Don't worry, because for that you need to understand one more concept, and I don't want to confuse you guys, so that's why I'm not coming to let in const, right? There's also a keyword, a variable called there's also a variable called const. Const भी cover करेंगे, but for now just focus on what is being taught. Right? अगर होता तो मैं I would have told you guys, because I don't want others to get confused for now. That's why not doing it. ठीक है? अच्छा, ये तो हो गया चलो हमारा ऑब्जेक्ट. उसके बाद there's a thing called updation, right? अब let's suppose मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, right? उसके बाद how do I add a new key to it? इसमें की वैल्यू का वेरिएबल है, नॉट एग्जैक्टली, मतलब इसमें वी डोंट कॉल इट अ वैल्यू, इसमें यू ओनली कॉल इट अ की, राइट? दिस की हैज दिस वैल्यू, दिस की हैज दिस वैल्यू, दिस की हैज दिस वैल्यू, ठीक है? अब देखो था क्या, इफ इन केस ऑफ एन एरे, अगर आपको कोई एलिमेंट बाद में ऐड करना था तो यू यूज दिस, राइट? यूज्ड पुश, आपने पुश यूज किया था.
चलो let's check कि how do we add a new key in an object. ठीक है, I'll quickly come here. I'll say how to add and update new key in an object, right? तो उसके उसके बाद उससे switch जैसा कैसे हो गया? switch जैसा थोड़ी है, switch is something else, right? switches तो we use it in case of if else. Under what condition can object be best used? So Naveen देखो, in case of storing data, right, we always use objects. हम कभी भी array use नहीं करते हैं. We always use object because they have certain methods that you can take advantage of and you can use it in your project. So बहुत से जैसे let's suppose you have got object.stringify, object.parse, right? In fact जो हमारा API का data जो आता है, right, most of the times, even 99% of time, 99% of the times it is in the format of an object. I'll quickly show you an example. तो let's suppose, I think मैंने पहले दिखा रखा है आपको. Let's suppose I go to fake store API. For those of you who don't know API, just ignore it. I'm just giving you an example. I'm just going to docs. Docs भी छोड़ो, ये मेरे पास एक API है, right? And ये this data is coming from the server. अगर मैं API को fetch करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखो, अब ये है क्या? This is an object. चलो ये भी छोड़ो. I come to my Brave browser, right? I come here and let's suppose I go here. तो ये देखो ये है क्या? This is an object, right? This is an object, key value pair. This ID is a key, one is a value. Title is the key, this is the value. This is the key, this is the value. So all the information that you get are in the form of key and value pairs, always. तो इसलिए objects are very widely used in JavaScript. ठीक है, तो ये भी देखो, और सिंपलेट फॉर्मेट में चाहिए तो ये देखो, this is the key, this is the value, this is the key, this is the value, price is the key, 109.95 is the value, description is the key, this is the value, and things like that. Got it? डाउट है किसी को? What are objects? पता लग गया? Yes. Do you नवीन, अरे थैंक यू क्या बोल, चलो ठीक है, that was all about objects. हाँ ठीक है, I was now on how do you update object. ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट तो बना लिया. Let's suppose now I would want to add some new keys, right? After that, how do I update? So I quickly come here, right? Just give me a second. Updation, updation, updation. For updation and for adding a new value, let's suppose adding a key, adding a key. उसके लिए you use a dot operator. You use a dot operator नहीं, dot notation, I would say. Dot notation like this. ठीक है, तो देखो कैसे यूज करते हैं. देखो अगर आप यहाँ पे आओगे, if you come here, let's suppose I want to add a new key, तो मैं क्या करूंगा? I'll say obj, जो मेरा ऑब्जेक्ट का नाम है obj dot, I'll mention the key, let's suppose 5 equals to, I'll mention here what do I want here, या फिर I'll mention what, let's suppose I want here value 5 like this. Now if I come here, if I do एक second, I think I missed it. एक second. Yes, now I have this object, right? Now I have to update it. So quickly do one thing, obj dot update, ठीक है, obj dot key one and the value that I want to update. Let's suppose I want to update a key value to some value 100. So I'll mention it. I'll mention here value 100. Now if I go to my object, right? Now if I go to my object and if I do this, so now you can see my initially my value was 100 key one, right? And now I'm updating it and I'm setting it to a new value of 100.
Now in this case अभी क्या हुआ है, मेरा जो वैल्यू था instead of value it has now become value 100. Got it? How do you update in value? For you that you use a dot operator. And access करने के लिए you can also access, right? You can also access. So let's suppose I want to access this value. Instead of obj1, I don't want the whole object. I only want to display obj1 dot key3. तो वो भी मैं कर सकता हूँ. Now in this case only the key3 will be visible to me, and that is value 3. So key3 का जो भी value है, if I want to display it, I can only do it like this. I'm using var because so far we have only covered var, we have not covered let and const. That's why. Because if I do let and const, you guys will get confused because we have not covered hosting so far, and that will be covered late in the later part of the bootcamp, maybe some other days, but not now. Okay, that's how you check it. Any other doubts? Any other doubts, guys? Any other doubts? Shall we move ahead? आगे बढ़े. ठीक है, ये तो हो गया हमारा अपडेशन वाला पार्ट, राइट? सर ये हो गया हमारा अपडेशन. ओके, दिस इज द अपडेशन पार्ट, नॉट एडिंग. अपडेशन. उसके बाद विल बी हैविंग एन एडिंग अ न्यू की. हाउ डू आई ऐड अ न्यू की? ठीक है, उसके लिए कुछ नहीं करना. ठीक है, यू जस्ट कम हियर, लेट मी जस्ट अनकमेंट दिस पार्ट आउट. यहाँ पे कम हियर, I quickly type the name of my object, that is obj, right? Now I give it a key that I want. Let's suppose I want key 4. I want a new key that is key 4, and I give it equal to, and let's suppose I give it a value of 4. Now if I do this, right? Now if I do this, so now automatically key 4 will be added to my object, right? Now if I go here and I do this, why it is giving an error? Why it is giving an error? Let me see. Let me try using const. इससे फर्क नहीं पड़ेगा. अच्छा, अरे my bad, because I am ठीक है, my bad. I'm not using single quotation. ठीक है, अब देखो, अब now it will work. ये देखो हो गया कि यार देखो key 4 I've added as a key 4 as a value 4 now. As simple as that. Objects can have key value pair only. Yes, string. Yes, sorry, that was my bad. अच्छा, now let's suppose अगर मेरे को वैल्यू भी देनी है ना, देखो एक चीज और है. If I give here, let's suppose value 4 equals to value 4, and now if I give value 4 like this, now it will work fine, because now I have stored that value in some other value that is a string format. So you can also do it like this if you want. Otherwise, if you don't want to do it like this, you can also directly access it like this. As simple as that. ठीक है guys, clear है? Objects, can I have at least yes or no in the chat box? Are objects clear? Yes or no? Objects clear हैं? Yes or no? Doubts हैं तो let me know. I'll also clear them out. But for now, please clear your concept, because objects काफी ज़्यादा use होते हैं. Like projects में हर जगह you'll see objects and objects only. So it is very clear that आप objects के छोटा अगर कुछ भी doubt है तो please make sure आपको अभी से clear हो रहा है, because अगर you will not clear your foundations, then आगे this keyword नहीं, Ravi, we're not doing object oriented JavaScript, that's why we're not using this keyword. And by the way, this तो आजकल use करना बंद ही हो गया है. We mostly use functional JavaScript nowadays. Object तो काफी पुराना हो चुका है. In fact, most of the companies also don't use Uppsala JS. Inverted comma? क्या inverted comma? ये this क्या है? अच्छा, या हाँ, ये तो हो गया ना. ठीक, राइट, क्लियर है? राइट, क्लियर गाइस, क्लियर. आगे बढ़े.
ठीक है, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट बचा था कल का, दैट इज कॉल बैक्स। ठीक है, एक बार उसे भी देख लेते हैं। How do we know how many object items we have at a time? For example, you use object for Naveen, I didn't get a question. Like you want to count the number of what do you say, these keys? अगर आप if you are wanting to count the number of keys, तो उसका कोई ऐसे डायरेक्ट मेथड नहीं है, राइट? फॉर दैट either you can loop करके चेक कर लो, काउंटर एक इंक्रीमेंट लेके, दैट इज अगेन वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, राइट? एक काउंटर एप्लीकेशन ले लो, एक काउंटर वेरिएबल ले लो, लूप कर लो, एंड जितने बार यू सी दिस की, just increment your counter by 1 and that will tell you the number of keys. इसका भी डायरेक्ट ऐसे वे आई थिंक नहीं है फिलहाल, तो यू कैन डू इट, कुछ जुगाड़ जुगाड़ बैठा के कर सकते हो करने दो, बट या ये डायरेक्ट वे आई थिंक नहीं है इसका। It's a second. Phoenix has also got. Just let me confirm that, Phoenix. Just a second. Uh, I think for that you have a delete keyword. Let me see. Let me see. Okay. I mean, let's try only see. देखना क्या है इसमें. Object length. I'm not sure. I'm not sure. Let's see. देखते हैं. But ये सिर्फ array का होता है. This is not. I'm sure that this is not in case of there in case of देखो नहीं है, होता तो तक आ जाता, नहीं है, अनडिफाइंड आ रहा है, नहीं है, साइज भी नहीं है शायद, कुछ नहीं होता यार इसका, यू हैव टू लूप एंड चेक। ठीक है, राइट। अब देखो, अब हमने देयर इज आल्सो अ वे टू डिलीट, राइट? डिलीट कैसे करते हैं, वो भी बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, ओबीजे, यू हैव टू राइट ओबीजे, जब नाम है ओबीजे, राइट, डॉट डिलीट, एंड हियर यू मेंशन कि आपको डिलीट क्या करना है। लेट्स सपोज आई वांट टू डिलीट की 1। नाउ if you go ahead and print your this nahi, it's giving me an error, it is giving me error, delete obj.key4, acha, right, it is delete obj.key3, let's suppose. Now if I come now, if I see, तो ऐसे as you can see, अब जो मेरा key 3 था, it had a value of 3, now it has got deleted from here, right? This is the delete operator, right? ठीक है, क्लियर है? यस धनंजय, क्लियर? चलो आगे बढ़े, ऑब्जेक्ट्स क्लियर है सबको? गाइस यस और नो इन द चैट बॉक्स, इज इट क्लियर? बाकी लोग बता दो यार, क्लियर है? क्लियर क्लियर, नरेंद्र क्लियर, करुण क्लियर, बाकी व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट अबाउट अदर्स? अरे बस 3-4 लोग ही देख रहे हैं क्या? ढाइना क्लियर, उत्पल क्लियर, ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट अबाउट अदर्स? क्लियर सर, मूव अहेड। ठीक है, बाकी तो बता दो यार, व्हाट अबाउट अदर्स? आई हैव ओनली गॉट 6 or 7 रिस्पांसेस सो फार। क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव अहेड। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट बता था कल का, दैट वाज कॉल बैक्स। पीपल आर शाय अरे भाई चैट बॉक्स में ठीक है यार, शर्माने की क्या बात है, बिंदास पूछो, डाउट है पूछो, क्या दिक्कत है? चलो ठीक है, क्लियर है सबको, नाउ लेट्स मूव अहेड। करण सेज पीपल आर शाय, क्या बात है, शर्माने वाली क्या बात है यार, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत हो जाओगे। चलो ठीक है, वी हैव कवर्ड एरेज, ऑब्जेक्ट्स, नाउ वी हैव टू कवर कॉलबैक्स। चलो कॉलबैक्स कवर करते हैं। व्हाट आर कॉलबैक्स? देखो, रिमेंबर यस्टरडे वी डिड फंक्शन, राइट? तो अगर मैं कोई फंक्शन बनाता हूँ fun,
एंड यहाँ पे आई कैन गिव वट एवर आई नेम आई वांट टू दैट फंक्शन। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने कुछ डाला है, ठीक है, कुछ भी डाला है यहाँ पे फंक्शन, ठीक है। एंड रिमेंबर कल हमने वी डिड अच्छा बिफोर दैट आई वांट यू टू टेल मी, आई वांट टू टेल मी दिस थिंग। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे f1 लिखा है एंड नाउ हियर आई एम पासिंग सम वैल्यूज, हाँ, एंड नाउ हियर आई एम पासिंग सम लेट्स सपोज वैल्यूज 20 एंड 30, ठीक है। So, what do you think? What is this thing? What is this thing called in terms of functions? ये 20 30 क्या है मेरे पास? What are these called? मैंने कल बताया था ये, right? What are these called? देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देगा इसका। Because I have taught this concept yesterday. जिसने ये रिवाइज किया है, he will or she will get to know the answer. करना is already answered. बाकी लोग what are these values? क्या बोलते हैं हम इन चीज को यहाँ पे? Arguments या parameters? What are these called? Arguments or parameters? Arguments. Phoenix says arguments. Dhananjay says arguments. Anurag arguments. Utpal arguments. Saurav parameter. Ravi arguments. सब कंफ्यूज है यहाँ पे। पैरामीटर धनंजय, एक्चुअल पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट। व्हेन कॉलिंग फंक्शंस दे आर आर्ग्यूमेंट्स, कॉलिंग के टाइम आर्ग्यूमेंट्स ए। अरे एक आंसर बताओ यार, आप दो आंसर की बोल रहे हो सब। व्हाट आर दे कॉल्ड? आर दे कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स और आर दे कॉल्ड पैरामीटर्स? यार कल ही कराया था मैंने ये, मतलब आप लोग लेक्चर्स देख रिवाइज करते नहीं हो, फिर कह रहे मैंने रिवाइज किया है। बताओ। यस। 20 and 30 आर आर्ग्यूमेंट्स, पैरामीटर। अभी अभी सब कंफ्यूज है। देखो आई टेल यू। हाँ जी, आर्ग्यूमेंट्स। देखो, जब भी हमारा एक चीज आता है, जब भी हमारा फंक्शन डिक्लेयर होगा, ठीक है, पक्का देखो एग्जैक्टली यहाँ पे आई टेल यू, यहाँ पे इट इज कॉल्ड पैरामीटर। मैं लिख देता हूँ ताकि याद रहे, पैरामीटर। यहाँ पे इट इज कॉल्ड एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब देखो, वेन एवर आर्ग्यूमेंट लिख के ले लो सर, चलो ठीक है। अब देखो, लॉक कर दिया भाई, कर दिया। देखो अब देखो, वेन एवर यू आर इनवोकिंग अ फंक्शन, ठीक है, याद रखना इनवोकिंग। कल मैंने बताया था इनवोकिंग क्या होता है, राइट? इनवोकिंग अ फंक्शन, जब भी आप हमेशा फंक्शन इनवोक करोगे, एट दैट टाइम इफ यू पास एनीथिंग इनसाइड दैट फंक्शन, दैट इज कॉल्ड एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। वेयर एज दिस इज अ फंक्शन डिक्लेरेशन, राइट? जब भी आप फंक्शन डिक्लेयर करोगे यहाँ पे, this is the invocation part, this is the declaration part, right? Whenever you are declaring a function, right? Whenever you are declaring a function, and in that case if you have something in these brackets, in that case it is called as a parameter, ठीक है। got the difference between argument and a parameter? आप तो नहीं भूलोगे कभी भी, बहुत कंफ्यूजन होता है इंटरव्यू में, काफी कुछ आता है डिफरेंस बिटवीन आर्गुमेंट एंड पैरामीटर्स, एंड ट्रस्ट मी 70 to 80% लोग उल्टा बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो अब देखो, while declaring arguments and while calling parameters, yes Utpal, exactly, yes Dhananjay, राइट, ठीक है, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो yesterday हमने इसमें देखो we had passed numbers to it, right? इसके अंदर में हमने numbers पास करे थे, this is the number, right? if I want I can pass a string as well, ठीक है। हाँ आप सही थे भाई, आप सही थे, कोई नहीं। देखो ठीक है, अब नाउ, ठीक है, अब नाउ व्हाट आई वांट, हमने यहाँ पे नंबर पास कर दिया, हमने यहाँ पे स्ट्रिंग भी पास कर दिया, बट व्हाट इफ आई पास अ फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन? तो लेट्स सपोज इनसाइड दिस आई मेक अनदर फंक्शन। उस फंक्शन का नाम लेट्स सपोज लेट मी गिव fn and let me pass and let me call it and let me just do console.log, क्या दे, s दे दे, नहीं कुछ और देते हैं। अच्छा फंक्शन, अच्छा inside this I am calling another function. How do I call a function? I give it a function keyword, function मैंने लिखा, function का नाम लिखा, दो राउंड ब्रैकेट डाले और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डाले, and if I do console.log, this is a child, this is a main function, ठीक है। फंक्शन कॉल कर दिया, एंड नाउ इफ आई कम हियर, मैं यहाँ पे आया और
लेट मी रिमूव दिस पार्ट. मैंने यहाँ पे इसको रिसीव किया एज अ क्या फंक्शन. चलो ठीक है. एंड नाउ इफ आई डू राइट, आई कंसोल डॉट लॉग. यहाँ पे मिलता हूँ दिस इज अ, चलो ठीक है सेकंड मेन रह देते हैं. दिस इज अ क्या नाम दें, डाउन फंक्शन नीचे लिखा है इसलिए. एंड दिस इज एन अप फंक्शन ताकि कंफ्यूजन ना हो. दिस इज एन अप फंक्शन. ठीक है. एंड इस अप फंक्शन के अंदर आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन अगेन. ठीक है. तो मैंने किया क्या है, मैंने एक फंक्शन बनाया. एक फंक्शन के अंदर instead of passing a number or a string as an argument, I am passing a function as an argument. एक फंक्शन बनाया मैंने. ठीक है. एंड यहाँ पे आई एम कॉलिंग दैट फंक्शन, आई एम रिसीविंग इट हियर इन अ पैरामीटर एंड आई एम इन्वोकिंग इट. एंड नाउ आई एम प्रिंटिंग द आउटपुट. राइट. अब हम इसको जल्दी से रन करते हैं. रन किया हमने. देखो दिस इज अ डाउन फंक्शन, दिस इज एन अप फंक्शन. अब हो क्या रहा है देखो, इसमें एकदम ध्यान से सुनो. मैंने फंक्शन कॉल किया. ठीक है. उस फंक्शन it has a argument of a function inside this. Right. This function is calling this function. यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ एंड यहाँ पे आई एम इन्वोकिंग दिस फंक्शन. यहाँ पे कौन सा फंक्शन इन्वोक हो रहा है, यहाँ पे ये वाला फंक्शन इन्वोक हो रहा है जो फंक्शन मैंने एज एन आर्ग्यूमेंट भेजा था ऊपर वाले फंक्शन के अंदर. एंड नाउ दिस इज गेटिंग कॉल्ड एंड as soon as this is getting called, my control is coming here and it is printing this line. This is a down function. उसके बाद after this function has been printed, it is moving to line number 25 again and it is calling this is an up function. And यहाँ पे I am getting an up function. ठीक है. तो to sum it up I would say callbacks. ठीक है. इसको हम नाम देते हैं callback functions. callback functions. callback functions क्या है? This is a callback function, right? What if you don't call? Yes. So अगर आप यहाँ पे इसको नहीं कॉल करते हो and now if you go ahead and you print it, now you will get only an up function because you are not invoking it, right? Invoke नहीं करोगे तो कॉल कैसे होगा वो? It is there but you're not calling it, right? ठीक है. Callback functions are those functions which are okay Naveen, which are एक सेकेंड. हाँ ठीक है. which are sent as an argument to a function. ठीक है. देखो callback functions क्या होते हैं? callback functions are those functions which are sent as an argument to a function. This function is being sent as an argument to a function, so that is why this fn is a callback function here. तो कॉलबैक का देखो, कॉलबैक का यूज एज थ्योरी पार्ट में कोई यूज नहीं है, राइट? सो अगर आप एक कॉन्सेप्ट और होता है हाई ऑर्डर फंक्शंस. आई थिंक वी वोंट बी कवरिंग दैट, बट फॉर नाउ इफ यू आर यूजिंग हाई ऑर्डर कंपोनेंट, राइट, एचओसी, हाई ऑर्डर फंक्शंस, तो उसमें क्या होता है, लेट्स सपोज यू एक फंक्शन होता है आपका मैप. तो इन केस ऑफ अ मैप, राइट, इन केस ऑफ अ मैप यू हैव अ सेट ऑफ प्री डिफाइंड कॉलबैक्स जिनको यू कैन यूज, एंड दैट कॉलबैक्स आर अ फंक्शंस दैट हैज अ पर्टिकुलर मेथड अटैच्ड टू इट, एंड उस मेथड को आप यूज कर सकते हो. That is the use of callbacks, right? Not in case of theoretically, but जब आप practical use करोगे callbacks का, in that as a concept it is very important because you need to understand that how a callback exactly works. अगर आपको पता ही नहीं callback काम कैसे कर रहा है तो you won't be able to like be implement that part. ठीक है. जैसे example अगर मैं लूँ, example of अगर मैं HOF example लूँ मैं higher order function का, चलो HOF भी cover कर ही लेते हैं यार. देखो कुछ नहीं है, HOF भी बहुत simple है. high order functions, इसका एकदम उल्टा है, कुछ नहीं, इसका एकदम उल्टा है. ठीक है. functions that receive RECIEVE RECIE RECEIVE receive
callback functions, right? Callback functions as an argument are called high order functions. ठीक है, इस एग्जांपल्स अगर मैं दूं आपको, एग्जांपल्स आर मैप, एक बार देख लेना मैप मेथड क्या होता है. मैप, you have got set timeout, set interval, interval, etc. Right? So what do you mean by high order functions? High order functions are those functions that accept a callback into their arguments. So in this case, Achha, you tell me. I want the answer from you guys. In this case, what is fun here? Is it a callback or is it a high order function? Anyone? In this case, what is fun? Is it a callback or is it a high order function? Tell me. Anyone for that? कोई भी मेरे को बता दो इसका आंसर. Complicated, I know it is complicated, but trust me, if you watch the recordings, बहुत ही आसान है, बहुत ही easy the process है, right? तो एक बार make sure to watch the recording as well. HOC, HOF यार, high order. I think you got it, right? You got it. So what are high order functions? They are those functions that accept a callback. So this is accepting a callback as an argument. This is a high order function. Whereas no, Ravi, it's not a callback. Callback is function. Those functions that are acting as a callback, right? This is acting as a callback because it is being passed in as an argument. So this is a callback. Whereas this function, this is accepting a callback. This is a higher order function. So this is the difference between a higher order and a callback. It is a very good important interview question as well. What is the difference between HOF and callback functions? ठीक है, इसको एक बार प्लीज गो थ्रू दिस, प्लीज एक बार इसको देखना, ठीक है. एंड fun is a higher order comp. Yes, fun is a higher order functions, and this fn is a callback function. As simple as that. Got it? Clear है? अगर कोई डाउट है तो प्लीज अगर बता दो. I know it might be a little complicated, but trust me, एक दो बार रिकॉर्डिंग देखोगे, रिसर्च करोगे, it will be as smooth as butter, अमूल butter. It is very easy, but it just need practice. That's it. Function fn वाला देखो, function fn वाला कुछ नहीं है. This function, right? This function is acting as a argument inside fun. So this function is called as a callback function because it is inside your high order function. That is why it is called as a callback function. फंक्शन fn वाला बता दो कहाँ गया. देखो कुछ नहीं हुआ, मैंने फंक्शन कॉल किया, राइट? ये मेरा एक फंक्शन हाई ऑर्डर फंक्शन है, एंड इस फंक्शन में आई एम पासिंग दिस एज अ कॉलबैक फंक्शन. ठीक है, समझ आ गया? ये जैसे हमने कल के एग्जांपल में नंबर्स पास किए थे एज अ आर्गुमेंट, हियर वी आर पासिंग अ फंक्शन एज एन आर्गुमेंट. मैंने यहाँ फंक्शन पास किए, ठीक है, एंड उसके बाद इस फंक्शन के आई हैव सम स्टेटमेंट ताकि आई कैन नो दैट व्हेन इट इज बीइंग कॉल्ड. यहाँ पे मैं जस्ट सिंपली प्रिंट करते दिस इज अ डाउन फंक्शन, दैट्स इट. उसके बाद आई हैव कम हियर, राइट? आई हैव कम हियर, मैंने इसको इन्वोक किया बिकॉज़ दिस इज अ इन्वोकेशन, राइट? दिस इज एन इन्वोकेशन. आई हैव इन्वोक्ड दिस फंक्शन एंड यहाँ पे आई एम कॉलिंग इट. कॉलिंग के बाद आई एम जस्ट इन्वोकिंग माय कॉल बैक फंक्शन. देखो यहाँ पे मैंने कॉल बैक फंक्शन इन्वोक किया है, और कॉल बैक फंक्शन मेरा क्या है? कॉल बैक फंक्शन मेरा ये पे जो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है. As soon as I invoke this function, right, this is getting called and this is getting printed. This is getting printed here. This is getting printed. This is the down function. And as soon as this gets printed, my control gets shifted to line number 25. And इसके बाद मेरा this is up function print हो रहा है. Can we access some
callback function can be simple. Yes, you can. कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं? Global तो कैसे भी कर सकते हो, right? Let's suppose you have var global equals to, let's suppose YouTube, right? And यहाँ पे if I want to console.log global as well, you can. Global as well, you can. So now if I come here, देखो यहाँ पे हो गया print YouTube. ठीक है, क्लियर हुआ बतुला? अब क्लियर हुआ ना, राइट? उत्पल आपका डाउट भी क्लियर है? We can use global like this. ठीक है, और क्लियर होगा? Just make sure to practice it and watch recording again. हो जाएगा, don't worry. अगर नहीं हुआ तो मैं तो बैठा ही हूँ. I can clear it, right? You can reach out to me on LinkedIn as well. कोई issue नहीं है. I'll be more than happy to help you out. चलो. With this, we are done with this part as well. कहाँ गया? हाँ. We are done with the callbacks as well. Just a second. ठीक है, उसके बाद we have DOM. Fun is a higher function and fn is a callback function. एक second, let me see. You are saying fun is a higher function and the function fn is a function fn, within fn is a callback function. Yes, this is correct. So not exactly like, but yeah. So ये जो मेरा fun है, अच्छा, I'll also specify, right? Wait. In this example, fun is an HOC whereas this is ठीक है. नवीन अब क्लियर है? Naveen, is it clear now? Fun is a higher HOC and fn is an callback. Yes. Very clear. Great. ठीक है. Now we'll be starting with DOM and after we will be doing a project. ठीक है. अच्छा, do you guys want to take a break 5 to 10 minutes? 5 मिनट का ब्रेक लेना है, or do you want me to continue? इसको मेरा कॉल बैक था यहाँ पे. Let me move it here as well. Here we ब्रेक चाहिए 5 मिनट का. कंटिन्यू करना है. बाकी लोग बता दो यार, सिर्फ निशान से दे रहे क्या आज? एक साल लगता है. चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, सब कह रहे हैं तो. 5 minutes break. I can get a coffee I need after callback. yes. मतलब callback थोड़ा सा I can understand, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है, बट बहुत ही आसान है वैसे तो अगर देखा जाए. आई थिंक काफी आपके पास मेथड्स भी होते हैं, तो जैसे इसकी बूट कैम्प में तो वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम कि मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और मेथड्स कवर कर लूं. बट जो आपके मेन लेक्चर्स होंगे, इनका जो प्रॉपर जो कोर्स है, उसमें दे बी कवरिंग इन डेप्थ नॉलेज अबाउट all the HOC, all the callback functions, जैसे मैपिंग हो गया, reduce, slice, splice, सारे के सारे, set timeout, set interval. In that case, you'll get a very clear cut idea
और व्हाट एग्जैक्टली। सो जब आप लोग इम्प्लीमेंट करोगे ना इस चीज को, तो बहुत चीजें समझ आएंगी, राइट। बट फॉर नाउ, फॉर इंटरव्यू पर्पस अगर मैं पूछूं तो even if you give even if you give this much of explanation, it will be more than enough. I mean, this is not half, this is exactly the way you should answer in an interview, by giving examples. अगर आपको किसी ने इंटरव्यू में पूछ लिया what do you mean by callback functions, so instead of just giving the blunt definition that this callback function or this, instead just code along, just give an example. Hi Harsh, okay, I'll be giving a break, don't worry. i'll I'll be giving an example, and instead of directly giving the theoretical knowledge example, interview को just impress him by coding it with an example and then explaining the concept. So उससे क्या होगा, the chances will get increased of getting shortlisted in case of an interview, right? So Naveen, exactly what issue do you think can be solved without any callback? Tell me. ऐसा कोई इशू है जो बिना कॉल बैक काम, बिकॉज सी कॉल बैक्स आर नथिंग बट क्विक हैव द फंक्शन एट द एंड ऑफ द डे, राइट? फंक्शन अगर आपके पास नहीं होंगे तो जो आपके फंक्शन के मेथड्स होते हैं, तो आप हाउ डू वी यूज देम? लेट सपोज, चलो कॉल बैक भी छोड़ो यार, लेट सपोज ये पुश हमने यहाँ पे यूज किया था, राइट? अगर आपके पास पुश नहीं होता ये, तो अगर आपको एरे के ऐड बाद में यू वांटेड टू ऐड सम एलिमेंट्स टू इट, तो आप वो कैसे करोगे? इसके बारे में टेल मी वन थिंग। तो ऐसा नहीं है कि यूज नहीं है, लाइक इट इज वेरी वाइडली यूज, इट्स जस्ट दैट थोड़ा सा आई कैन अंडरस्टैंड इट कैन गेट कॉम्प्लिकेटेड, बट ट्रस्ट मी, प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे धीरे धीरे, जब you'll get more, you'll watch the recordings, you'll clear your doubts, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बट मुझे लगता नहीं द वे आई हैव एक्सप्लेन्ड, एंड इसके अलावा कुछ बचा है इसके अंदर, मैंने आई हैव एक्सप्लेन्ड इट बाय गिविंग वेरी सिंपल एग्जांपल्स, राइट? फंक्शंस क्या होता है, कॉल बैक्स क्या होते हैं, इससे ज्यादा आई डोंट थिंक कुछ चाहिए आपको। एक बार रिकॉर्डिंग भी अगर नहीं समझ आया, कैन अंडरस्टैंड, पहले वाली होता है, कोई इशू नहीं है नवीन, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, नो इश्यूज, जस्ट ट्रस्ट मी एंड वॉच द रिकॉर्डिंग्स, वॉच इट अगेन, नो इश्यूज, ठीक है? ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट वाइज आई थिंक यू आर concept wise you are good, but I can understand that you are not getting where to use callbacks and where to not, right? I can totally understand. For that I'm saying you have to use a map method. Let's suppose if you, अच्छा, देखो एक चीज, ये देखो ये हमारा मैप मेथड है, ठीक है? दिस इज यूज्ड टू मैप इन योर एरे। देखो, देखो ये एक मैप मेथड है, ठीक है? नाउ दिस इज एक्सेप्टिंग अ फंक्शन, राइट? एंड दैट फंक्शन हैज three arguments: current value, index and array, right? So in this case ये क्या हो गया मेरा? Anyone can let me know what is this in case of array map? क्या हुआ है यहाँ पे? you have a map, inside that map you have got a function, right? ये function मेरा, it is accepting 3 parameters, right? So in this case it is acting as a callback, ये हमारा callback है यहाँ पे। exactly Navin, you got it, right? So this is a callback. अगर हमारे पास ये नहीं होता तो how do we access the current value? हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है करंट वैल्यू को एक्सेस करने का कोई। how do we access the index? We don't have any method to access the index. how do we access an array? We don't have any method to access an array. उसके लिए we need callbacks. For that we need callbacks, right? So this is the use of callbacks. Again, बहुत सारे methods हैं आपके पास, just explore this website, right? And just see कि कौन कौन से, देखो मैप हो गया, एक फिल्टर भी होता है, filter you see somewhere, data filter, ठीक है? filter भी it's a callback because it is also accepting this function, right? So this is a very practical example of अच्छा tell me, चलो ये तो हमारा callback हो गया, right? और and what is this here? Is it also a callback or it is a higher order function? बताओ चलो, is filter a callback or is it filter a higher order function? And now it makes sense, right? And tell me, what is this? Is it a filter? Is it a call? Is it a HOF or is it a callback? Yes, it is a HOF, right? Because it is accepting a callback, right? As you can see, it is accepting a callback into its parameters, into its argument, right? That is why it is called as an HOF. That's why I said map, ठीक है? Map
एक यहाँ पे एक्सेट्रा में फिल्टर भी आ जाएगा वैसे तो। Filter, it is a callback, right? It is a HOF, right? You can also refer to these docs and you can see. Okay, so with that being said, let's take a 2-minute break and let's come back after that. Yep, I'm back. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, let's continue with DOM. DOM. I am back. Yes, I'm back. Okay, yeah. ठीक है, DOM. अच्छा, DOM किसको आइडिया है? What is DOM? Anyone? Anyone got any idea? What is DOM? What do you mean by DOM? किसी ने पहले कर रखा हो DOM? बताओ किसी को. What is DOM? Right? What is DOM? Anyone? Document Object Model. अरे फुल फॉर्म पूछ रहा हूँ दोस्त, होता क्या ये बताओ. फुल फॉर्म तो बता दोगे, चलो ठीक है. It stands for Document Object Model. To select HTML element, Karun says no idea. Okay, no issues. Document object model used to modify and add elements in JS. Okay, tree of objects. Good answer उत्पल. Tree like structure of HTML elements. Okay, good answer. दोनों ठीक है. तो देखो, I think most of you have guessed it correctly. DOM is nothing. Right, देखो DOM का यूज क्या होता है, राइट? DOM से चलो ठीक है हम कर लेंगे. DOM where it is used. सबसे important use case DOM का है that it is used to make dynamic web pages. Used to make dynamic web pages. ठीक है. How do you make dynamic web pages? How do you do it? ठीक है. That is all case of how to use DOM. But for now, it is just for the just consider that it is used to make a dynamic web page. ठीक है. इसके बाद it is a structure. It is a tree like structure. ठीक है. तो होगा कैसे पता है? होता देखो, I'll tell you होगा कैसे. यहाँ पे if I come here,
ये मेरा एक बैकग्राउंड है, ठीक है। इसमें लेट्स सपोज आई हैव अ हेड, उसके बाद आई हैव अ बॉडी, ठीक है। जस्ट लाइक दिस, आई हैव अ हेड, हेड के अंदर आई कैन हैव अ बॉडी, जो कि होता ही है इनिशियली। आई कैन हैव अ बॉडी, ठीक है। एंड उस बॉडी के अंदर आई कैन हैव वेरियस टैग्स, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, दिस इज अ बॉडी, राइट। दिस बॉडी नाउ, दिस बॉडी, राइट, दिस बॉडी इट कैन हैव टैग्स, राइट। तो लेट्स सपोज जैसे एक div टैग है, अरे 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 अरे, चलो ठीक है, एक div टैग है, ये div टैग आ गया। इस div टैग के अंदर लेट्स सपोज मेरे पास एक और div टैग है, यहाँ पे आई हैव वन मोर div टैग है, यहाँ पे आई हैव वन मोर div टैग। लेट्स सपोज एक div टैग ये रहा और एक div टैग ये रहा, ठीक है। देखो हो क्या रहा है एक्चुअली, देखो हो क्या रहा है। लेट्स सपोज आई विल टेल यू वेरी प्रैक्टिकल यूज केस। Yes, exactly, ठीक है। I'll tell you a very practical use case. So let's suppose I go to a website called as Netflix, ठीक है। अब नाउ, नॉट नेटलिफाई यार, नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स, ठीक है। आई कम टू दिस पेज, राइट, आई कम टू दिस पेज, ठीक है। अब देखो नाउ व्हाट डू यू थिंक यार, देखो आई हैव दिस ब्राउजर, राइट, दिस इज माय ब्राउजर। नाउ हाउ डू आई मेक श्योर दैट whenever I click on this input box, whenever I click, अरे hi hello Dilip, whenever I click on this input box, right, and whenever I click on this English button, how do I make sure that all the contents are acting the way I want? At least कुछ ना कुछ तो मेरे HTML को connect होना पड़ेगा जैसे, so that it can be made dynamic, right? So if I come here, right, if I open my Excel drawer, at least I need something, right? तो जैसे let's suppose what is there, I have this HTML web page, ठीक है। मेरे पास एक HTML web page है यहाँ पे, HTML web page है। and उस HTML web page को I need to somehow connect it with my JS फाइल। ये मेरी एक JS फाइल है, ठीक है, ये मेरी एक JS फाइल है। लेट्स सपोज क्या है, JS फाइल है, ठीक है। एंड आई वांट कि यार देखो जो मैंने यहाँ बटन बनाया ना, लेट्स सपोज आई हैव क्रिएटेड अ बटन, एंड ये बटन, ठीक है। आई वांट, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेनेवर आई एम क्लिकिंग ऑन दिस बटन, दिस इज ओपनिंग, राइट, हिंदी इंग्लिश यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ओपन हो रहा है। तो हाउ इट इज वर्किंग, as soon as I'm clicking my button, right, I'm adding an event listener. Event listener क्या होता है, event listener let's suppose मैंने जब click किया, right, it will listen to a click. I as a user can know, I as a developer can know, and my browser can know कि I have clicked on this button and now I want to target some event. जैसे मैंने इस बटन पे क्लिक किया, it knows कि I have clicked on this button and now this is loading this option with this is loading this option, ठीक है। तो here if I click on any button, let's suppose I have made a function, मैंने एक बटन बनाया है, ठीक है। एंड जैसे मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग एन ऑप्शन दैट सेज इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। एंड हाउ इज इट डूइंग इट, इज इट डूइंग विद द हेल्प ऑफ इवेंट लिस्टनर्स, इट इज डूइंग विद द हेल्प ऑफ, इट इज डूइंग विद द हेल्प ऑफ इवेंट, LISTENERS, ठीक है। हाउ इज इट एक्सेसिंग, whenever I'm clicking on this button, I'm generating an event, ठीक है। I'm generating an event and that event is being listened, and as soon as that event gets listened, my this page opens up. So this is how I am making my web page dynamic, right? This is how we make any web page dynamic.
How do we do it? By adding event listeners. ठीक है, हमारे बहुत टाइप के इवेंट लिस्टर्स होते हैं, बहुत सारा टाइप के इवेंट लिस्ट जो most commonly used event listeners. Let's suppose I click on a button. How will my browser know that I've clicked on a button? That will be with the help of an event called as onClick. onClick, ठीक है. Some examples of event listeners listeners are onClick. ठीक है, onClick क्या करेगा? Whenever I click on a button, it will trigger an event listener, and that event listener I can use it whenever and wherever I want. onClick हो गया. You also have an event listener called onChange. You also have an event listener called onSubmit. This is used for forms only. I'll tell you an example also, don't worry, but for now just bear with me. ठीक है, forms. ठीक है, ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे event listeners होते हैं that act as a bridge between your HTML and your JavaScript. As soon as you click on your button, you'll get your event listener will be get activated, will be get triggered, will be get referenced, and that event listeners you can manipulate and do whatever things you want. Event listeners are an interface between HTML. Yes, you can say. ठीक है, अब ये तो हो गया बाकी थ्योरी. सीधा हम आते हैं एग्जाम्पल पे. आई कम हेयर. ठीक है, उसके पहले लेट मी मेक एन इंडेक्स फाइल एज वेल. तो लेट सपोज आई एम मेकिंग स्क्रिप्ट 3.html. ठीक है, ये मैंने बनाया एक बॉयलर प्लेट. सबसे पहले मैंने लिंक किया स्क्रिप्ट को src इक्वल्स टू script 3.js. ठीक है, यहाँ पे आई हैव script 3.js. ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल दिखाता हूँ. लेट सपोज मेरे पास एक बटन है. बटन मैंने बनाया. आई एम एडिंग लेट सपोज ट्रिगर एंड इवेंट लिस्टर. ठीक है, अब जल्दी से जाता हूँ मैं इसको लाइव सर्वर से ओपन करता हूँ. ठीक है, देखो ये क्या बटन ट्रिगर एंड इवेंट लिस्टर. अब देखो लेट मी जस्ट अरे 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 स्टॉप लाइव सर्वर. एक सेकेंड. या ठीक है, सो दिस इज माय इवेंट लिस्टर. ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ जैसे मैं इस बटन को क्लिक करूँ ना, आई वांट टू टारगेट एन इवेंट. ठीक है, आई वांट द ब्राउजर टू नो दैट आई हैव क्लिक्ड ऑन अ बटन एंड नाउ दैट बटन शुड परफॉर्म एनी ऑपरेशन. ठीक है, तो कैसे करेंगे? I quickly come here. This is my button, right? In order to target a button, first of all, what do we need? We need the reference, right? And reference हम कैसे provide करेंगे? I should give it an ID. मैंने इसको ID दी, let's suppose button, right? And that ID, I quickly go. I hope everyone knows how do we get element by ID, right? तो कुछ नहीं करना, document. और उसके पहले let's do one thing. Let me just quickly copy this, right? Document dot get element by ID because I have an ID. And what is the name of my ID? It is BTN, right? And let me save it some variable where BTN equals to this. ठीक है, अभी देखो हुआ क्या है. कुछ नहीं हुआ है, मैंने बस एक बटन बनाया है. That button is having the reference of this. And now whenever I click on this button, I want an event listener to be targeted. So let's suppose button dot add event listener. How do you add an event listener? By typing add event listener. जैसे आपने ये add कर दिया, now here you have to specify which listener you want to listen to. So let's suppose I want to listen on an event called as onClick. ठीक है, what will it do? It will add a listener to my button as soon as I click on my button. ठीक है, तो let's suppose मैंने एक फंक्शन बना लिया. ठीक है, और मैं फंक्शन यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, फंक्शन fn. ठीक है, इक्वल टू मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस यहाँ पे आई एम प्रिंटिंग अलर्ट. ठीक है, अलर्ट
function has been called, fn has been called. ठीक है, देखो अभी हुआ क्या, यहाँ पे I have made a button, right? This button has got an ID to it, and after as soon as I click on this button, I need to trigger an event. ठीक है, now what will happen? As soon as I click on this button, I come here, I get this by ID, right? As soon as I click, I make an event called on click. As soon as I click on click, this function will get executed, right? As soon as this function get executed, it'll say function has been called. So let me just open the console. Okay, right. So as you can see, whenever I'm function has been called. Just give me a second. Can we write directly button.onClick? We can. For that you can use internal script, right? For that you can use internal script, but let me see why is it not triggering. Function has been called button. Let me do one thing. Let me just quickly button.add event listener मैंने call किया function fn, and let me just console something here. Console dot log this is a button, right? Why is it not triggering? Just give me a second. Only click. Acha, right. Only click is written. Yup. My bad. ठीक है. तो देखो, sorry, we don't use on click. We only use click. So I'll tell you the difference. On click is the name of an event listener, and click is what it is being called. ठीक है. So I'll tell you, right? I'll quickly come here. On click event listener. देखो, on click event listener. If I quickly come here to W3 school, see देखो. Document.get element by ID. This is an on click listener, right? But जो इसका event है, this is by a name of a click. If you give click to it, then only it will run, right? Like this. So this is how my point being, this is how you add an event listener. How is my browser knowing that I have added a click button? By invoking a event listener click. As soon as I'm clicking on this button, this function is getting invoked, and I am seeing this message that this is a button. ठीक है. Hierarchically, JS will always process. Yes, so JS will be processed after, not before. JS processing will be come before. No, first your HTML will be loaded, and in the DOM tree, after your HTML gets loaded, you'll get your script tag. But CSS is loaded before. Remember that CSS is loaded before, and JS is loaded afterwards. ठीक है, clear है, guys? Is event listener clear? How do we add an event listener to any button? Is it clear? Yes or no in the chat box. Clear nahi hai to let me know. I'll explain it properly. तो क्या है, explain it the more easy way possible. Do let me know if it's clear or not. Yes or no. Naveen says got it. What about others? Yes, what about others? Yes. Okay, Utpal says yes. Diana, Dilip, clear. Karan once more. देखो Karan, क्या किया है मैंने? I've added a button in my HTML tag, right? And that, yes, so what I have done is, okay, see, I have added a button in my HTML file, right? And I want that whenever I click on a button, right, I should trigger an event, and that event should be visible to me. So what I have done is I have just given it an ID. This is my ID of a button, right? And what I'm doing is I'm just coming to my JS file. This is my JS file, and this is how you get the reference. First I got the reference, like document.get element by ID btn. So I've got this ID by reference. This is my ID,
And as soon as I get this ID, right? As soon as I get this ID, this gets saved into this button variable. Okay. Now what is happening? Now this button, I'm adding an event listener. What is an event listener? Event listener are used for tracking and or listing any events. If I'm clicking on a button, I want my browser to know that I have clicked on a button and now I want to perform some actions. That is what I meant by a event listener, right? And what is the type of a, you mentioned here the type. What is the type of an event listener? It is a click. As soon as I click on this button, I want this function to get loaded. And if I'm coming to this function, I'm just alerting a message. It says function has been called. So if I click on this button, it says function has been called. Utpal, yes, if you want to add on click here also, you can add it here as well. So let's suppose if you want to add an on click in like this also button on click, you can add it here as well. But I am using it in an external file. So that's why I'm giving it an ID, and that ID is being referred to my script3.html. There you can do it here as a function, and this function you can call it. Let's suppose आपने एक function बनाया, and that function, let's suppose you have a script tag. You are calling this function. Let's suppose क्या है fun, and here you are alerting. Let me just comment this part out. यहाँ पे you're calling alert, and you are giving it a message that this is a button. Let's suppose कुछ भी example दे दो, ठीक है? अगर आप यहाँ पे आओगे, as you can see, you have got this here a message. But my point being is, this is an event listener. If you add it here, you have to use on click. If you're adding it here, you have to use click, because it is the listener is click, right? The listener is click. That's why you're using click here. So that's why I was emphasizing on this part. Okay, let me just come here and comment this part out. ठीक है? I need to कोई issue नहीं है. You can watch the recording, some issues. Okay, I'm using React, so got confused. Yes. In React, you can. It is no need for adding it externally. You can do it in there. But see, here you have an option. Either you do it like this. अगर आपके पास, if you have only 2 or 3 on click, if you have only 2 or 3 lessons, you can add it here as well. But in case of big projects, you need to make a separate file, and that you have to get the reference and then do it in that way. ठीक है? Got it, guys? Yes or no? Got it? What do you mean by event listeners? क्या हम एक project करेंगे, उसमें और चीज और clear हो जाएंगी. But for now, are event listeners clear? Yes or no in the chat box, यार. Yes or no, clear है या नहीं? Got it. What about others? Utpal got it. Dilip got it. Satya Ranjan got it. What about others? Very clear. चलो बढ़िया है. Very clear. अब project करेंगे और clear हो जाएगा. Yes sir. Clear. अनुराग, नरेंद्र. What about others? बाकी लोगों को? Okay, ठीक है. देखो, अब एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है? आई होप क्रिस्टल क्लियर. ओके मोनू, देखो कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है, इसका नाम है फॉर्म वैलिडेशन. तो लेट्स सपोज एक बना लेते हैं फॉर्म डॉट html और फॉर्म डॉट js, ठीक है? CSS अगर मेरे पास टाइम हो तो we'll be doing the CSS as well, but I will leave the CSS up to you. जो डिजाइन बनाना है डिजाइन बनाओ, जो बैकग्राउंड कलर देना है बैकग्राउंड कलर दो, it's up to you, but I'll be implementing the functional part. तो ठीक है. अच्छा देखो, what do I mean by form validation? तो let's suppose मैंने उस दिन बताया था ना, let's suppose अच्छा I go to netflix.com, I go to sign in page, ठीक है? Now देखो, what do I do here? This is sign in page, right? This is sign up page. यहाँ पे I enter some email ID, blah blah blah. I enter some password, right? Now a very basic concept. How will my browser know that I have entered
the correct credentials or not? Just tell me that. How will my browser know whether I have entered the correct credentials or not? I'll tell you. It is done with the help of form validation. Let's suppose when I click on sign in, right? It will say, sorry, we cannot find this account. Why? Because whenever whatever email ID and whatever password I am entering here, that is getting validated. And if that email ID and password are correct, then only I'll be navigating to the home page. ठीक है? समझ आया? Why do we use form validation? We use it to validate a form, validate any user ID or password so that we can give access to the user of that particular website. Let's suppose आप Facebook हो, let's suppose आप Instagram पे हो, right? Instagram पे you type in your login ID and password, and if that is correct, then only you're able to log in. Similarly यहाँ पे होगा. So how do we do it? So it's very simple, ठीक है? First of all, we'll be creating a form. फॉर्म हमने बना दिया, ठीक है? एक्शन छोड़ो, सिर्फ फॉर्म बनाते हैं. फॉर्म बना दिया. उस फॉर्म में लेट्स सपोज आई हैव एन इनपुट आईडी एंड इनपुट एज आईडी एंड पासवर्ड. इनपुट मैंने डाल दिया एक टेक्स्ट जिसमें आई विल बी पुटिंग सम लेट्स सपोज प्लेस होल्डर. यहाँ पे एंटर योर यूजर नेम. So authentication is again a different process, right? Database भी तो या database नहीं. So Karan, so database आपको कब जरूरत होता है? Database is needed when you have thousands of usernames and passwords. In this case, we are only authenticating a single ID and password with the help of DOM manipulation. That's it. ठीक है? आप देखो, आपको पता लग जाएगा. It's very simple. ठीक है? Input. इसमें let me give it as a text of password. Type of password. ठीक है? Name ID मैंने डाला यहाँ पे. And उसके बाद let me put a placeholder and let me give it enter your password. Enter your password. ठीक है? उसके बाद I'll make a submit button जिसमें I will submit and I'll check if that is correct or not. Input type submit और उसकी value I'll give it login. ठीक है? So I'll quickly go. Before that, we'll skip my JS file. Form.js. Form.js. And after that, I'll quickly open it with my live server. So already open है क्या? Open तो नहीं है. ठीक है. And यहाँ पे मैं आ जाता हूँ. So I'll let me minimize it. And एक चीज और करते हैं. br एक और ब्रेक देते हैं. And same चीज यहाँ पे देते हैं. Right. ठीक है? समझ आ गया? सिंपल सा कुछ नहीं बनाया मैंने इसमें CSS ऐड नहीं कराया बिल्कुल भी. CSS I leave it up to you. I will be just focusing on the implementation part. ठीक है? You can add the CSS, you can use flex box and make it in between. ठीक है? And उसके बाद you can add some background color and things like that. No issues. No issues. अरे inside ही चलो बाद में देते हैं. रुक जाओ. ठीक है? तो this is what you'll have it for now. ठीक है? Got it. After that, I'll just quickly come here. ठीक है? उसके पहले I need to give some ID, right? Because I need to get the reference. Input ID. यहाँ पे I'll give the ID equals to username, let's suppose. यहाँ पे I'll give an ID equals to password. यहाँ पे I'll give an ID equals to let's suppose क्या दें इसको, login दे देते हैं. चलो ठीक है, login. And इस form की let me also give it an ID. Let's suppose ID equals to form. ठीक है? अब मैंने कुछ नहीं किया, simply मैंने बस I have just given it some ID so that I can get the reference. ठीक है? I'll just quickly come here. I'll just do document dot get element by ID. What is the name of my ID? In this case, it is form. Got it?
Now I have this form with me. After this form, let me just store it somewhere in some variable. Let's suppose var form equals to this. I'll quickly do one thing. I'll just add an event listener to it. Form dot add event listener, and you have got a event listener for form submission. Okay. Remember we did an event listener for click. So as soon as you are clicking on this button, it was getting and my event was getting triggered. Similarly, you have event listener for submit, just like submit. As soon as submit, I'll call a function. As soon as I click on submit, I'll call a function. Okay. And here I'll just quickly call my function function fun equals to. Okay. यहाँ पे I want to check whether am I able to access that function or not. For that I'll just quickly confirm. I'll say function has been called. ठीक है. तो मैंने कुछ नहीं किया है. मैंने just I've made a form बना दिया. ठीक है. उसमें मेरा input है, एक पासवर्ड है और एक लॉगिन बटन है. ये तीन चीजें हैं. Correct. After that I am just getting the reference. मैंने यहाँ पे form का reference लिया because this is an ID of I've given it an ID of form. So document.getElement by ID form. I got the form, and this form I'm adding an event listener that as soon as I submit my form, this function should get triggered. So let's see. Let me submit my form and let's see whether I'm getting this message or not. So if I click on login, so as you can see, it is saying function has been called. Okay, it simply means that I have clicked on this. I have clicked on this function, and this function is getting triggered. अब मेरा काम बहुत आसान है, मुझे कुछ नहीं करना. सबसे पहले I need to see what the user has entered. इसमें बहुत just focus very carefully. How do I do it, right? So this is my input field. Now I want ki whatever the user name, whatever the user types in this field, I want to get it. How do I get it? It's very simple. I'll tell you. First of all, I need to get the reference. And what is the ID? It is username. So quickly come here. I'll do var user name equals to document dot get element by ID. What is the name of the ID? It is username. And in order to see what the user has entered into that field, I just need to do one thing. I'll just do console dot log username dot value. इससे क्या होगा? Whatever value I provide in my username, that will get triggered. So if I come here, if I click on console, right? See, अब मैं यहाँ पे provide कर रहा हूँ. Just give me a second. हाँ, ठीक है. And after providing, right? After providing, let me see if I'm able to call this function or not. This function is getting called. Document.getElement by ID user. Let me just copy this ID. Where username equals to, let me do it user as well because username I don't think so. Document.getElement by ID username and console.log user.value. Let me just save it, right? And as soon as I click on this value, I need my form to be triggered. Okay. I'm just not sure why it is not getting triggered. Just give me a second. Function बनाया मैंने. I have added this event listener. Alert तो काम कर रहा है. Right. ठीक है. तो user dot add event listener. As soon as this listener get triggered, I'll make a function of key up. Just give me a second. Just give me a second. Just give me a second. I'm not sure, but let me just try e dot
prevent e dot prevent default. Why is it not triggering? I'm not understanding. A document element by ID username. No. That is not the issue. I think we are missing on some event listeners. Oh, I think I have made a mistake. This is my ID, right? This is my ID, and I'm triggering a form. It has got a submit type. It has got a login, and it has got an ID, right? As soon as I'm clicking on this form, I'm clicking on submit button. I'm coming here, function fn e dot prevent default, where user equals document dot get element by ID username. Let me remove this part and let me just refresh. Let me just refresh. E is not defined. Okay, okay. E is not defined. Now let's see. It is being called. I think I'm missing on something here. The last line you missed this. No, I. Where you're saying this, but that is not the case. That is not the case. Let me just see. Let me just give me a second. No. वो तो ठीक है समझ Okay. Console.log user dot value. अरे यार, I'm not submitting the form. So silly of me. Sorry. देखो कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया। देखो देखो यहाँ तक समझ आ गया सबको? हाउ डू आई डू दिस, हाउ डू आई डू दिस, हाउ डू आई गेट इट? आई हैव जस्ट डन नथिंग। मैंने एक फॉर्म बनाया है, फॉर्म के बाद मेरे पास एक आईडी है। नाउ दिस आईडी आई एम गेटिंग द रेफरेंस, आफ्टर दिस आई एम एडिंग एन इवेंट लिस्टर ऑफ सबमिट. So as soon as I submit this form, right, I am getting the reference of my input field. So I मुझे अब चाहिए that whatever name I type into my input field, I want that reference. So this is the reference that I have. So यहाँ पे मैं जो कुछ भी टाइप करूंगा, here I'll get that reference. This and whatever name I type, that will get stored in this value. Clear till this part? And similarly, I'll do one for password as well. So let's suppose I have one var password equals to document.get element by username. This says password. ठीक है? Got till here? And now if I console.log my username and password, I'll get that into my console. User.value. How do I get it? I do it like this. If I do user.value, not this, user.value, and here I do password dot value. अब देखो, let's suppose I have typed here Ritik, and the password I have typed here Ritik at the rate 123. And if I click on login, I get my username and ID as a password here. ठीक है? Clear till this part? यहाँ पे अब तक किसी कोई डाउट है तो let me know. I'll explain it again. Guys, clear till this part? Yes or no in the chat box. Clear till this part? Yes or no, guys? Clear till this part? अब तक clear है? कोई issue है तो let me know. Dilip says clear. What about others? बाकी लोग कहाँ गए? Okay, once more. Okay, I'll explain. What about others? What about others? Prevent default, I'll tell you क्या है. Not clear. Bhuvnesh says not clear. बाकी once more. चलो ठीक है. देखो, first of all, prevent default क्या, I'll tell you. If I don't use prevent default here, okay, if I don't use prevent default here, अब देखो, अब मैं क्या करूँगा? If I type my name, if I type Ritik,
if I type Ritik @123, अब देखना, देखो, focus on the console, only my username is visible to me. Why? Because जो फॉर्म का जो डिफॉल्ट एक्शन होता है ना, फॉर्म का जो डिफॉल्ट एक्शन होता है, इट इज टू सबमिट. वो एकदम से झटाक से मेरा सब कुछ सबमिट कर देगा. बट आई डू नॉट वांट टू सबमिट माय फॉर्म. आई जस्ट वांट कि जो मेरा इन्फॉर्मेशन आ रहा है, आई वांट दैट इन्फॉर्मेशन टू स्टे ऑन माय स्क्रीन. So that's why we are using prevent default. Prevent default क्या करेगा? It will prevent the default action of my form. And what is my default action? It is that as soon as I click on my form, it will send the data to the backend if you are using backend, and my data will just vanish. But for now we are not using backend, so that's why whatever data I type, that has to stay with me, that has to stay in my console. So for that reason we use prevent default. ठीक है, चलिए prevent default clear है. अब इसके बाद मैंने क्या किया है, आई हैव जस्ट क्रिएटेड अ फॉर्म. ठीक है, ये मेरा एक फॉर्म है, इनपुट फॉर्म बना दिया. फॉर्म के अंदर आई हैव गिवन इट एन आईडी. मैंने एक आईडी दिया फॉर्म को, और यहाँ पे मैंने उसको एक यूजर नेम दिया, यूजर नेम एंड पासवर्ड. एंड अगेन आई हैव गिवन यूजर नेम हियर एंड पासवर्ड हियर एज वेल. ठीक है, आईडी मैंने दी सेपरेटली, एंड एक मैंने इनपुट की आईडी दी है, दैट इज लॉगिन. ठीक है, अब देखो, अब अब now I want that whatever I as a user type in the input field, right? I want that thing to be visible to me, because अगर मेरे को पता ही नहीं होगा कि यूजर ने टाइप क्या किया है, then how will I validate? That is the basic necessity of form validation, right? I should know what my user has typed. तो अगर for that, what I did is I just got this reference document.getElement by id form. ठीक है, ये देखो मेरा फॉर्म का रेफरेंस आ गया. After that, I am adding an event listener. Remember what are event listener? They are used to connect an HTML to a JavaScript by adding an event listener. अब जैसे ही मैंने इस event listener पे कॉल किया है, I'm adding an event listener called submit. It means that whenever I submit my form, whenever I click on this button, whenever I submit it, my event listener will get triggered and it will call this function. उसने function को call कर दिया. And as soon as I call this function, I just want that whatever username has typed in the input field and as well as in the password field, I need that information, right? So how do I get it? I first got the reference of the username. As you can see, this is the ID, username and password. I just got the reference of username and password. As soon as I got the username and password, I need to check what is the value there. So for that I use dot value. Whatever value, जो भी मैंने value डाली है username और password में, that value is being stored here. So let me do one thing. Let me just make another variable and then store it. So let's suppose bar user equals to user dot username bar user login equals to user dot value. And similarly एक मैं बनाऊंगा पासवर्ड के लिए, where pass login equals to password dot value. ठीक है, ये what is e? So e is nothing, ये बस एक ऑब्जेक्ट. So if I console.log e, देखो e कुछ नहीं है, e बस it is an event of objects. So let's suppose if I type something like this, so as soon as I click on e, देखो मेरे पास I get an option जिसके अंदर काफी सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, मेरे पास मेथड्स हैं, राइट? as you can see, e dot submit, e dot target, देखो ये सब चीजें मेरे पास e के अंदर आती हैं. So for the point being you can ignore it. For the point being आप just ये समझ लो, e is a set of object that will get triggered whenever I call it. That's it. ठीक है, and also you can ignore it for now, don't worry about it. ठीक है, अब देखो, as soon as I get this, right? As soon as I get it, मुझे कुछ नहीं करना. I want to set a password. So let's suppose मैं एक manually password set करता हूँ. I'll tell if user login triple equal to, I'm giving my username, let's suppose Ritik,
and you log password login नहीं and pass login triple equal to, let's suppose I'm giving myself a password as Ritik @123, right? As soon as I see this password, I'll just alert that credentials CREDIA and credentials are valid, welcome to home page. ठीक है, बस इसके बाद else I say alert incorrect credentials. ठीक है, देखो अभी मैंने किया क्या है, I got the username and I got the password, right? As soon as I see, like if my username is Ritik and my password is Ritik@123, then only I'll check that credentials are valid. तो टाइप चेक, हाँ तो मैं टाइप ही चेक कर रहा हूँ ना, तो आई कैन यूज डबल इक्वल टू इफ आई वांट टू, बट फॉर सेफ्टी पर्पस आई एम यूजिंग ट्रिपल इक्वल बिकॉज आई वांट टू मेक श्योर अगर कोई ऋतिक डाले इन केस ऑफ लेट्स सपोज नंबर एज वेल, तो मेरा वो भी ना चले. आई जस्ट ओनली फॉर इन दिस केस आई अंडरस्टैंड अगर मैं डबल इक्वल डालूं इट विल वर्क फाइन, बट फॉर सेफ्टी पर्पसेस आई एम यूजिंग ट्रिपल इक्वल. ठीक है, देखो अब देखो, नाउ इफ आई टाइप ऋतिक and if I type the password as Ritik@123, now if I click on login, it says credentials are valid, welcome to home page. हाँ दिलीप दोनों कंपेयर करेगा, right? But let me type another password. Let me type, let's suppose this, and now if I log in, it says incorrect credentials, please come back later. ये देखो, incorrect credentials, please come back later. समझ आया मैंने क्या किया है? इतना सिंपल था ये. दिस इज हाउ यू डू अ फॉर्म वैलिडेशन. इसमें ऑब्वियसली और चीजें होती हैं, यू कैन यूज regex and you can use what not things, but this is the simplest type of form validation that you can get. If I type in the correct password, it will say, अच्छा पासवर्ड गलत हो गया, एक सेकंड, it will say credentials are valid, welcome to home page. ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, is it clear? Now I want you to do one thing. I want you to add some CSS to it, right? I want you to make it like, now what do I want? So this is your task, right? This is your task. Just go to netflix.com. If you go to the sign in page, right? If you go to this page, this is what exactly I want from you guys. The functionality will remain the same, but just make this, just make this CSS part. Just give it a background, just give it a black background color. Just add a red color to it, and if you want to add this thing, you can also add. This is your homework. This is your task for today, right? Rest the functionality part has been covered, and that you don't need to worry about. That is all for the project, guys. All clear? Dilip, everyone, all clear? Yes, Karan got. Yes, Karan, you got it right. Why we are using the double equal to and when we use triple equal to. अगर यहाँ पे आप double equal to use करोगे तो it will work fine. It will work fine, no issues. But I just want to provide an extra protection to it. So let's say अगर किसी ने डाल भी दिया कुछ गलती से तो that also it will not work. अगर यहाँ पे if I do it, now it will also work fine. See, I'm typing the correct password and it says credentials are valid. Welcome to home page. ठीक है, क्लियर है सबको? दिलीप क्लियर, भुवनेश क्लियर, सत्रजैन क्लियर, Anbu clear, Narendra clear, Dain clear, Vijay Anand clear. What about others? Clear है भाई? You successfully have validated a form. Yes, clear. Great, great, great. So ठीक है, that was all about the form validation part. Now you got your homework, right? You got your homework. So this homework you have to add some CSS to it, and you have to make it exactly like this.
right? Got it? Chalo, that was all for today's session, right? I hope you guys enjoyed the session. I at least कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस तो आएगा अब जावास्क्रिप्ट में, हाउ टू बी यूज जावास्क्रिप्ट, कैसे लिंकिंग करते हैं डॉम वगैरह, functions वगैरह. I think all these concepts must be clear to you now. Remember, we have already covered the most important, most widely asked questions. There are very other things. I want you to just go home and revise those parts. Let's suppose you want to, you are getting confused with arrays, sorry, mapping, filter. Just go home and see what do they do, right? Otherwise, you can always, take help and take reference of all the resources that you have. So, okay, that is all from my end, guys. Let's wrap it up. Thank you. Chalo, okay. That's all from my end, and we'll see each other maybe in some other bootcamp, right? All right. Bye, guys. Bye. If you have liked this Essentials program, which is giving you a confidence that you can become a developer, this is just a starting. You can enjoy this learning for at least next 6 months and also become a full stack web developer or a full stack data science person and crack a job end of the day. If you are interested for that program, just go check out LetsUpgrade's full stack program right now from the website. What are the key features of LetsUpgrade's full stack program? 3 key features of LetsUpgrade full stack program. Number 1, you get to learn everything live by an expert coming in from an industry. So this expert is working as a day job, and sham ke time, evening time, this guy is going to teach you in your classes. This cohort is going to be of only 20 students at the max. So lots of focus is there on you to make you an industry ready developer, and you can get jobs in 150 plus partner companies that we have got, that LetsUpgrade has got, NPCI, Red Cross and various other companies. Now talking about the second feature, you get to build 15 plus projects. These 15 projects will help you get the confidence that you can be the top-notch developer at any company. Let it be the FANG companies or the MANG companies, or let it be any tier 2 or a service-based or product-based companies. Third and the last feature, we have an amazing job board where on a day-to-day basis, we get 10 to 20 job descriptions, JDs, job applications being uploaded by companies directly. You can go ahead and check out those all jobs, apply, and we will go and get you prepared for that interview. So this is the 3 things, 3 big USPs of LetsUpgrade's full stack program. Go join right now. You can avail a 20% straight discount. The price of this program is 36,600, but you can get this program for 29,600 right now. Go check it out and let's meet in your batch one, which is happening this Saturday. Bye bye, take care, have a nice day.